Good afternoon. First, let me give a condolence message. The Bharatiya Janata Party wishes to put on record its grief and expression of loss in the death of Shri Kailashpati Mishra ji, who has been the governor of Gujarat formerly, was the founder member of Bharatiya Janata Sangh, and also served as Bihar's finance minister, was the president of BJP in Bihar, was also the vice president of All India Bharatiya Janata Party. His cremation is expected to take place tomorrow at 5 p.m. in Bhansi Ghat in Patna. We place on record condolences and pray that his soul rest in peace and the support that the party would extend to his bereaved family. Just before coming here, we have heard a very spirited defense of the Congress party's latest misadventure by the chief spokesperson of the Congress party. He has come up with a defense by taking names of eminent Congress leaders, by trying to talk about the ideology which derives a lot of comfort and strength for the common man in the name of socialistic value system, and read out passages from the Congress party's constitution, as though all of which are going to justify what the party has done in terms of giving in 0% interest. No interest is different from zero interest rate. Giving a huge loan as a political party for a commercial operation. Names dropping or names taking cannot justify a misdeed. And to then point at the Bharatiya Janata Party by taking the name of the party to say the BJP cannot defend or define what is political. It is the law which denies, laws of this land, which will define what is political. Neither the Congress nor the BJP, none of us are going to be able to define it, but it is the law of the land which decides which is political and which is not. And to have to say it is not the BJP which will decide on what is political, very carefully, but surely in a typical Congress fashion, the spokesperson says, "Hum tay karenge." No, sorry Congress party, you've got it wrong. It is very typical of the Congress to have that very arrogant statement come saying, "We will decide it." You decided, and that is where you lent the money at 90 crores of rupees, and you were wrong. So please don't take upon yourself decisions which are not in your hand. And also to quote passages from the constitution of the party, Congress party's own constitution, which has very populist and attractive words like socialism in it. Why is it that today, when this big misdeed has been done by the Congress party, do they remember socialism? Did they not remember it when they brought in 91, as they claim always, the globalization, liberalization? Was that also an extension of socialism? The Congress party moves conveniently out of socialism to open up Indian economy. Very well, all of us do believe in free market. But you were committing yourself to socialism, didn't you? Your resolution several times went on talking about Congress's commitment to socialism. Where was that Congress party in 91 then?
Where was that Congress party which is quoting socialism today? So neither ideologically nor as per the bylaws of the Congress party's own constitution, what they have done is justifiable. Political parties cannot lend money, whether interest-free or on a very high attractive interest rate. Political parties cannot lend money for commercial operations. And if only you're being repeatedly told that because it has been started by an eminent or several eminent congressmen earlier, that paper will have to be revived. It is you who closed it. The closure of National Herald as a paper was also done by the very same people. So, to give us an information today in a very sanctimonious tone does not justify where your own senior Congress leaders of that stature whose names you have taken today would have really hesitated to take any action. But you have done today what they did, they could not have done. Lent money for commercial operations. And clearly today the impression by observers, political observers, is the sudden interest in National Herald is probably through the Young Indian Trust, which has been formed by the General Secretary of the party, is far more probably for the real estate value, maybe. And it is very, very important for us to also know that political parties lending with interest or without interest cannot inadvertently become a conduit for money laundering. It is important to understand this. Political parties cannot inadvertently become a conduit for money laundering. We have to understand this, and therefore, even by taking names or by quoting a not so relevant passage from the Congress's constitution today, just because it picks on the word socialism, which you have violated by bringing the globalization under Congress-led regime in 91, to talk about these just very clearly shows that you're trying to deflect attention of the people from the core issue, which is the political party lending money, which is violative of income tax laws. Violative of income tax laws because both the donor and the recipient have tax exemptions. Somebody who gives money to the political party gives money for political parties' political activities. And the recipient, who is here in this case the Congress party, receives for political activities. And where the operations of a newspaper which was started by a congressman probably long time ago, and to then say that that attempt may not have a commercial benefit for the party, these are all trying to interpret it in a certain way which may or may not fit into the legal framework of the country. So the Congress party should now explain its position rather than keep justifying what it has done, quoting not so relevant sections of the law or not so relevant sections of the Congress party's own constitution. And if indeed the intention was to give an answer, why did the spokesperson today not take any questions from the media? Media obviously voices a lot of issues by raising questions and seeks answers. If you had enough justifiable explanations to give through the media to the people of India, why today the spokesperson, who was so very clear on what he wanted to say and brought in the bylaws of the Congress to justify what they've done, and tried saying no commercial benefit accrued for the Congress party, why couldn't he take the questions? After all, media, when it asks questions of the BJP or any other party, it's with an intention of explaining situation to the common man. Are you telling us today you will only choose to say what you want to say and not face the public? That's exactly what the Congress party has done. And we think by taking big names
it cannot absolve itself of the wrongdoing. And we demand answers from the Congress party. And if the enthusiasm of the Congress spokesperson was only to say, we are spreading and carrying forward the ideological commitment which Nehru and Gandhi had given, we like to ask you, did Nehru and Gandhi run away from answering? They answered with patience every question which was raised in the parliament. I'm talking of Jawaharlal Nehru and about both Nehru and Gandhi outside, wherever questions were asked by the media, by the citizens of the country, they answered all questions. Today, let me know, on every question which has been asked of the Congress, whether it is related to this particular episode of National Herald or earlier, as to why you have messed up the Indian economy. The common citizen is not able to buy things for himself for his survival. Why haven't you handled the price rise situation? Is this your ideological commitment to Nehru and Gandhi? Did they not feel for the common man? And where is that feeling for the common man today in the Congress? Where were you in talking about investigations which have to happen on corruption? From Nagarwala days, we see how the Congress is arrogating to itself, little by little, steadily, to a position saying, we will do what we want, but you may not question. That's proven by every act, whether it is the cabinet reshuffle, where you brought back all the corrupt ministers who have been alleged of corruption, whose cases have not been cleared yet, but you got them back. So what was the removal for then? You bring back people who have been charged and questioned on certain behavior, public conduct. You brought them back. Is this an extension of Nehru and Gandhi's ideological commitment to the people of India? Is this how you justify every action that you do? Today, suddenly, Gandhi and Nehru have come in the minds of the Congress party. Would Gandhi and Nehru justify the 17 rapes within 1 month? Would Gandhi and Nehru ever say, no, Chief Minister, it's all right, the whole country is, experiencing a lot of rape. It doesn't matter, we'll take care of it and come back. You go to visit a Dalit family which has been affected by rape and you pat the back of the Chief Minister and come back. Is that what Nehru and Gandhi has taught you? It's astonishing the way in which the Congress party remembers leaders who for them should have really been top priority to follow in terms of their conduct. Today they remember them to cover up the misdeeds that they've done, to cover up the insensitivity with which this government is running this country, to cover up running away from every question which is being asked. And today you saw the climax of it when it came to answering questions on issues which relate directly to those people whose names they've taken. They did not wait for the media to ask questions, nor they were ready to answer questions. The Bharatiya Janata Party clearly demands an inquiry into this matter, demands that the Congress party face the truth and answer questions, rather than running away yet again, probably for the 9th or 10th time, on major critical questions which have been on major critical issues of corruption, on which till today we have not heard any one of them talk. आज कांग्रेस की प्रमुख प्रवक्ता जिस तरीके से ये नेशनल हेराल्ड के मामले में अचानक नेहरू और गांधी को याद दिलाते हुए कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूशन से ऐसे पैराग्राफ को निकालते हुए भाषण दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे भारतीय जनता पार्टी की एक आध विषय के ऊपर आपत्ति है। क्या आज आपको नेहरू और गांधी को इतना याद आ रही है और उनके आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स को आगे बढ़ाते हुए ही ये सब काम कर रहे हैं, ऐसे उनके बयान आया है, जिससे हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या महंगाई के फेलियर में इनसेंसिटिव तरीके से आप बेरहमी के सरकार चला रहे हैं, ये भी कांग्रेस नेहरू और गांधी से सीखे हैं क्या?
और नागरवाला के कांड से लेकर के आज तक जितने भी करप्शन स्कैंडल्स होते आ रही है कांग्रेस की जब भी सरकार बनाते हैं, हम देखते हैं तब से लेकर आज तक वो ज्यादा से ज्यादा घमंड बन रहे हैं, जिससे कोई भी उनसे पूछने के लिए कोशिश करते हैं, उनको जवाब नहीं देते हैं, ऊपर से दौड़ते हैं बिना जवाब देते हुए। ये भी क्या नेहरू और गांधी आपको सिखाया? क्या नेहरू और गांधी ये भी सिखाया कि पार्टी के फंड से आप कुछ भी चलाओ परवाने और जस्टिफिकेशन देने के समय कॉन्स्टिट्यूशन के निकाल कर दिखाओ जनता को? ये भी कांग्रेस को नेहरू और गांधी सिखाया क्या? ऊपर से हम सबको मालूम है कि गांधी जी तो ये ऐसे इतनी दूर तक चले गए थे कि कांग्रेस को बंद ही करो और चाहिए तो जिनको चाहिए नया पार्टी बनाओ। आपको तब क्यों उसको माना नहीं है? आप कांग्रेस को तो चलाते रहे। इसीलिए ऐसे बड़े बड़े शख्सियत के नाम लेने के बहाना लेते हुए आज आपके जो भी गलत फैसला हुआ, इंटरेस्ट के साथ या बिना इंटरेस्ट लोन देने का जो हरकत कांग्रेस ने किया, उसको जस्टिफाई करने के लिए बड़े बड़े लोगों को नाम निकालना और जिस बाईलॉ को कोट करना, वो जो इससे डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं है उसको कोट करना, ये सब गुमराह करने के लिए कोशिश आज हुआ है। अगर सचमुच उनके जो भी निर्णय था 90 करोड़ बिना इंटरेस्ट देने का वो सही है, तो आज मीडिया से क्यों भागे? ही डिड नॉट स्टे बैक। मीडिया के पूछताछ प्रश्न कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो he need not have come, he could have sent somebody to read a statement. इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक कमर्शियल ऑपरेशन के लिए जब पैसा दिए हैं पार्टी की तरफ से, इनकम टैक्स लॉ को सही उल्लंघन कर रहे हैं। और इनकम टैक्स लॉस का रेलेवेंस इसलिए बनती है इस मामले में कि डोनेशन देने वाले को और लेने वाले उनका भी टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है उस अमाउंट के ऊपर। अगर पॉलिटिकल कारण खर्च उठाने के लिए आप पैसा ले रहे हो डोनेशन के नाम में, सिर्फ पॉलिटिकल खर्चा ही उठाना चाहिए था। आप तो उपयोग कर रहे हैं एक न्यूज़पेपर और उसके ट्रस्ट, उन सब का, वो जो कमर्शियल ऑपरेशन होती है। और ये भी माना जाते हैं पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि इसमें क्या रियल एस्टेट वैल्यू के लिए भी कुछ इंटरेस्ट है? यंग इंडिया ट्रस्ट का रियल एस्टेट की प्रॉफिटेबिलिटी से भी कुछ ताल्लुकात है, उसमें इंटरेस्ट है। ये सब ऐसे विषय बाहर आ रही है जिससे हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमें लगता है कि ये पूरे जांच होना चाहिए, ऐसे जांच होना चाहिए जिससे पॉलिटिकल का डेफिनेशन कांग्रेस ना दे। जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ही बोल रहे थे कि बीजेपी पॉलिटिकल क्या है इसका डेफिनेशन बीजेपी कर नहीं सकते हैं। बिल्कुल कर नहीं सकते हैं, आप भी कर नहीं सकते हैं, कानून तय करता है। इसलिए इस मामले में इंक्वायरी होना चाहिए, उसके बाद जरूरत पड़े तो कोर्ट में भी जाना चाहिए। This only the RSS can answer. I am talking on behalf of the BJP. And if you're asking a question about RSS's standards on probity and other things, surely I cannot be authorized to speak on their behalf. Absolutely, but it is a matter which you've directly defined within the purview of what RSS thinks, and they have spokespersons too. I'm sure you may be asking them and they will answer it. नहीं, रैली करने का जरूरत ही क्या है? अगर रैली कर रहे हैं ये तो मानकर चलना चाहिए। फिर वो निर्णय जो एग्जीक्यूटिव निर्णय हुआ कांग्रेस की तरफ से, जिस विषय के ऊपर पूरे देश भर में बहुत ही आवाज ऐसे आ रही है, उनके खिलाफ आ रही है, जो निर्णय हुआ उनके खिलाफ आ रही है। अगर सरकार निर्णय ले चुकी है विदाउट रेफरेंस टू स्टैंडिंग कमेटी राज्यसभा कॉमर्स ऑन द रिपोर्ट ऑन FDI, विदाउट हैविंग अ नेशनल डिस्कशन, अगर ये सब डिस्कशन के बाद और स्टैंडिंग कमेटी के रिपोर्ट का भी उनके स्थान देते हुए समझने के लिए कुछ अटेम्प्ट सरकार की तरफ से अगर हुआ, फिर रैलियां करने के लिए क्या जरूरत है? आप तो निर्णय ले आए, उसको इंप्लीमेंट तो करो।
उनको मालूम है कि जबरदस्ती एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल को इंपोज करने के लिए पीछे के रास्ते से ले आकर के एक 4 पेज नोट कुछ सेक्रेटरीज से बनाए हुए उसके ऊपर चर्चा भी करते हुए लागू करने के लिए जबरदस्ती से इंप्लीमेंट करने के लिए एक कोशिश हुआ और ले आए। फिर बाद में बोल रहे हैं कि नहीं स्टेट्स तय करें उनके अपने अपने स्टेट्स में क्या करना है। एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल के ऊपर कांग्रेस में ही अंदरूनी बहुत डिवीजन है। ये रैली वगैरह करने के बाद उसके ऊपर और शायद सोचेंगे, जैसे एलपीजी के प्राइस के ऊपर एक निर्णय कल, दूसरे निर्णय आज हो रही है। इसीलिए वो एक अंश है। दूसरा अंश ये भी है कि आज हर एक दिन कुछ घोटाला, कुछ स्कैंडल, इससे जनता के ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जरूर ये काम में आएगा। और हमारे डर भी हुई है कि एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल के ऊपर भी उनके कमिटमेंट सही नहीं है, मगर कानून ले आने के लिए कोशिश हो चुका है और इधर जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है स्कैंडल्स के ऊपर। इसीलिए कंफ्यूजन पैदा करो, रैली चलाते रहो, ये है उनकी रैली के मकसद। जिस नेता ने, अगर आप डायरेक्टली इस बात को प्रश्न पूछना चाह रहे तो पूछ सकते थे, इतना राउंड अबाउट आने की जरूरत नहीं है। जिस पार्टी के नेता खुद अपने तरफ से बोल चुके हैं कि आप आके इन्वेस्टिगेट करो, और जिस नेता बार बार मीडिया के साथ बैठकर उनके हर एक प्रश्न को जवाब देते रहे, इसका ऑपोजिट भी देख लीजिए। कांग्रेस से एक नेता अब तक मीडिया के सामने आकर बोले या इनवाइट किए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इसीलिए जनता इन सब को देख करके उनके अपने इंप्रेशन बनाते हैं। इसीलिए जनता को कम आंकड़ा में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, अगर उनके बायलॉस पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के मुताबिक पॉलिटिकल पार्टीज लोन्स या कमर्शियल लेंडिंग और सपोर्ट फॉर कमर्शियल पर्पसेस करना नहीं चाहिए। और उस बात के ऊपर अगर हम इलेक्शन कमीशन में जाकर के पॉलिटिकल पार्टी का रिकग्निशन डी रिकग्निशन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल व्हाट यू कॉल अप्रोप्रिएट है ये एफडीआई वाले रैली में। और इसमें एक और भी ऐड करिए ना, पूरे ऑफिशियल कांग्रेस की एक मंत्री आंध्र प्रदेश के, उनके डॉटर के शादी में भी काम कर रहे हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट भी है वो। इसीलिए एक तरफ रैली के लिए, दूसरी तरफ पर्सनल शादी के लिए, तीसरी तरफ कुछ और के लिए ऑफिशियल्स को दुरुपयोग करने में कांग्रेस तो माहिर है। Well, these are decisions with the government's stake, and if the government of India has decided to do it, with either the discussions being held along with Tamil Nadu government, we'll wait and see as to how it's going to be executed. We are certainly keen to know the details of it, and we'll respond once we know about it. Well, we don't, as a political party, we certainly take our own decisions. If citizens of India are also taking their own decisions to go to the court or stay where they are, it's up to them. There need not be a linkage between the two. We will take our position. As you know, the party has been talking about it. The leader of the opposition in Rajya Sabha has been talking about it in the press too yesterday. So, when a citizen, whether a citizen goes to the court or not, it is not as if we wait and watch that. It is more, of course, we'll watch it with great interest because it has a serious implication on how this country is being governed. But whether we are going to go to the court or whether we are going to handle is entirely a decision which the BJP will take. And once we take anything at all, we'll certainly let you know. वो तो बार बार बहुत सारे तरीके अपना रहे हैं एफडीआई को जस्टिफाई करने के लिए, जैसे ये रैली है और सरकार आने में हिमाचल में करेंगे वगैरह। मगर हिमाचल की डेवलपमेंट को एकदम नुकसान पहुंचने वाले कांग्रेस आज सडनली एफडीआई के द्वारा हिमाचल का डेवलप करेंगे ऐसे बयान देने में जनता का उनके बयान से भरोसा रख नहीं सकते। क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 10-15 साल के लिए जो पैकेज दिया था उस समय, उसको रोकने वाले यही कांग्रेस है। इसीलिए सडनली आज इतना कांग्रेस और हिमाचल प्रदेश के ऊपर आंसू बहा रही है, उसमें तो जनता के भरोसा नहीं होगा उनके।
और दफ्तर और कार नहीं मिल रही है, ये सब एक विषय है, मगर उनके जो जजमेंट आया एक मंत्री के ऊपर, राजकुमार चौहान, अगर लोकायुक्त के ऊपर इतने बात करने वाले कांग्रेस उस लोकायुक्त के जजमेंट को लागू क्यों नहीं किए? उस मंत्री का रिहा और व्हाटएवर रिलीफ फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट से लेकर राष्ट्रपति महोदय से भी उनका क्लियरेंस ले आकर के आज तक उनको कैबिनेट में क्यों रखे हैं? इसीलिए लोकायुक्त कांग्रेस को उपयोग में आते हैं जब दूसरे को डांटने के लिए, मगर उनके अपने पोल खोलते हैं और उनके अपने दुष्कर्म के ऊपर लोकायुक्ता बात करते हैं, उस समय कांग्रेस को लोकायुक्ता के नाम तक भी याद नहीं रहती। सी, वी हैव टू बी क्लियर, इफ ऑन द लोकपाल बिल the Congress has made up its mind or not. In the Rajya Sabha, the way in which Congress delayed, staggered, did not even say whether they intended to place it for consideration or for voting or for discussion that night, which was the last day of that session of the parliament. The same methodology may or may not be adopted now, to give us a feeler saying we are ready for this, but the rest are left without any question or answers. There were several amendments sought and in the Rajya Sabha on the Lokpal bill at that time. They should, if they are really committed and are sincere about passing the Lokpal bill, should in fact call all the political parties and say where they stand on it. Are they going to table it this time? Are they going to allow for discussion on the amendments that every political party, particularly the BJP, had asked for? Are they willing to talk about it? Are they willing to accommodate the amendments? Or are they going to stage manage a drama whereby then they can go about blaming everybody else, but they know they were the prime cause in not having passed it the last time? Isiliye, talking about just one amendment to which they yield or not is irrelevant now. They should now be open about what they want to do on it. लोकपाल बिल के विषय के ऊपर सिर्फ एक शर्त के ऊपर हम मानने के लिए तैयार है या उसके लिए हम कोशिश करेंगे, ऐसे बिट्स एंड पीसेस में रिस्पॉन्स देना कांग्रेस बंद करना चाहिए, क्योंकि देश में सब लोग देखें कि उस सेशन में जहां राज्यसभा में लोकपाल बिल का इंट्रोडक्शन हुआ और उस दिन जिस दिन वो लास्ट डे था, डिस्कशन करने से भाग रही थी कांग्रेस और उस समय क्या नाटक चला हम सब देखे। इसीलिए अब भी अगर कांग्रेस की नीयत साफ है, वो सभी विपक्ष दल से बात करना चाहिए कि क्या क्या अमेंडमेंट के लिए वो डिस्कशन करने के लिए तैयार है, कौन सी ऐसी अमेंडमेंट है जिसमें उनका आपत्ति है, ये स्पष्ट रूप से कांग्रेस पहले सामने रखना चाहिए। और ये भी करें कि डिस्कशन करो ऑपोजिशन पार्टी के साथ, फिर जेन्युइनली ले आओ राज्यसभा में उस बिल को। ये नहीं है कि चुटपुटे व्हाट यू कॉल इन बिट्स, इधर एक बात बोलो उधर दूसरी बात बोलो, आखिर क्या फॉर्म में उसको ले आओगे, अगर ले आओगे तो ऐसे। इसीलिए लोकपाल बिल के ऊपर सिर्फ एक कंडीशन और अमेंडमेंट के ऊपर इधर एक डिस्कशन दूसरे जगह पर दूसरे डिस्कशन, ऐसे करने से कांग्रेस बचकर रहना चाहिए। खुलेआम लेट इट बी ऑफिशियली सभी विपक्ष पार्टी के साथ बैठकर बात करें और उनके नीयत साफ से आगे बढ़ना चाहिए। जांच करने का मांग नेशनल इंटरेस्ट में कर रहे हैं हम, इसीलिए वो चुप है या तो वो साथ नहीं दे रहे हैं, ऐसे इंटरप्रिटेशन नहीं देना चाहिए। एनडीए एकदम एकजुट है इस विषय में, इसमें कहीं भी गलतफहमी रखने का आवश्यकता नहीं है।